अब हम लोकल एनेस्थेटिक्स को पढ़ेंगे। हम पहले देखेंगे एनेस्थीसिया क्या होता है। एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया वो सब्सटेंसेस होते हैं दैट कॉज रिवर्सिबल ब्लॉकिंग ऑफ perception of पेन। मीन्स ये जो एनेस्थीसिया होते हैं दे कॉज रिवर्सिबल ब्लॉकिंग ऑफ परसेप्शन ऑफ पेन, यानी कि वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमें पेन फील होने नहीं देंगे, ये परसेप्शन ऑफ पेन को ब्लॉक करते हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया क्या होते हैं। यूजुअली वी हैव टू टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया दैट इज लोकल एंड जनरल। लोकल एनेस्थीसिया वो होता है दैट इज अप्लाइड टू द restricted part, it is applied locally, while as general anesthesia it is meant for whole body, इसमें हमारे whole body पे इफेक्ट आता है। ये जो local anesthesia होता है it acts on the peripheral nerves, it acts on peripheral nerves, while as this acts on the central nervous system. This acts on central nervous system. This acts on central nervous system. In local anesthesia, there is not loss of consciousness. Means consciousness जो होती है it is unaltered. While as in case of general anesthesia, consciousness is lost, means there is a loss of consciousness. And another thing that is local anesthesia is used in case of minor surgeries, while as general anesthesia it is used in case of major surgeries. These are the general differences between the local anesthesia and the general anesthesia. Now coming to the classification of local anesthesia. In general classification, we have two groups depending upon the route of administration. In case of route of administration, we have injectables. While as in this case, another route of administration is surface anesthetics. In case of injectables, injectables are applied by means of injection, while as surface anesthetics are those which are applied on the surface. In case of injectables, we have three main subgroups. Number first is the short acting. Short acting में हमारे पास होता है, example is procaine and chloroprocaine. In case of second group is intermediate. Intermediate acting is lignocaine and prilocaine. While as in case of third category is long acting. In case of long acting, we have tetracaine, bupivacaine, dibucaine and ropivacaine. These are the examples of the long acting anesthetics. Now coming to the mechanism of action.
एक्शन। इन केस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, लॉन्ग ये जो हमारे लोकल एनेस्थेटिक होते हैं, दे शो देयर इफेक्ट बाय ब्लॉकिंग generation and conduction of nerve impulses in any part of the nerve which comes in contact. मीन्स इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये ब्लॉक करते हैं कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस इन एनी पार्ट ऑफ द नर्व। ये क्या करते हैं, दे affect voltage gated sodium channels. They block voltage gated sodium channels. They block voltage gated sodium channels. ये हमारे सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से नर्व कंडक्शन ब्लॉक होता है। मीन्स दे स्टॉप और इनहिबिट एंट्री ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयंस। उससे क्या होता है, देयर ऑकर्स रिडक्शन इन द depolarization. There occurs reduction in depolarization. Conduction slow हो जाती है और ultimately there is the blockade of conduction. This was about the mechanism of local anesthetics. Now coming to the effects. Systemic effects of local anesthetics. Systemic effects से क्या दिखाता है, depending on the concentration attained in the plasma, local anesthetics can produce systemic effects. Means जब हमारी ये depend करता है in the dose and concentration of anesthetics in the plasma. ये उस पर डिपेंड करता है कि अंदर कितना डोज चला जाएगा, उतने ये सिस्टमिक इफेक्ट्स दिखाता है। लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं विद ऑल ऑर्गन्स। दे इंटरफेयर विद द फंक्शंस ऑफ ऑल ऑर्गन्स इन विच द कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सेस ऑकर। CNS इफेक्ट्स क्या दिखाते हैं ये, इन केस ऑफ CNS इफेक्ट्स दे शो restlessness, tremors, and sometimes can lead to convulsions. Convulsions भी occur हो सकते हैं central nervous system से. Even they can lead to death in case of respiratory failure. These are the effects of the effects on the central nervous system. Now in case of cardiovascular system, they also show depressive effects. Means they cause depression of the heart. In this case, bupivacaine is more toxic, more cardiotoxic. ये सबसे cardiotoxic होता है than other local anesthetics. This is about the actions of the local anesthetics. For further details, we will continue in next session. Thank you.